Hello friends, welcome to my channel Mittu Sir Classes. Now I am going to discuss about the Indian polity. Indian polity, parliamentary democracy. Indian polity topic is the parliamentary democracy. First one is the parliamentary democracy. What is parliamentary democracy? Parliamentary democracy कहले कौन पूछा? Parliamentary democracy is a system. Parliamentary democracy is a system of the political party with the most seats in the house of for parliament during the federal elections. Federal elections becomes the governing the administration. Parliamentary system democracy टा कोटा कोन हला गुटे से सिस्टम जोथरे के पॉलिटिकल पार्टी माने इलेक्शन रे निर्वाचन रे भाग नै कोन करंती से माने फेडरल इलेक्शन होई सेटा कोन माने एडमिनिस्ट्रेशन माने शासन दायित्व ग्रहण करंती. Parliamentary democracy is a system the political party with the most seats in the house or the parliament, the most seats in the house or the parliaments during the federal elections become the governing administration, become governing the administrations. Okay, next one is constitutional provision. Next one is the constitutional provisions. Article 74 and Article 75. Article 74 and Article 75 provide that the parliamentary system of the center. Article 74 और 75 टा हमर कोन केंद्र सरकार को प्रযোज्य. Whereas the Article 163 and 164 are provide for the parliament of the state. माने राज्य मानन पई कोडा हला को आर्टिकल 163 आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 और केंद्र सरकार पई हला आर्टिकल 74 और 75 दिला फिट हला को हला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. Article 74 and Article 75 provides the parliamentary system for the center, and whereas the Article 163 and Article 164 provided the parliamentary system of the state. Okay. Next one, main important point of the parliamentary democracy. Parliamentary democracy. Main important points of the parliamentary democracy. Parliamentary democracy are divided into 5 points, 5 main points. Okay, 5टा main point रे ताको जामे विभक्त करछथि. First one is the ये parliamentary system of government. ये parliamentary system of government is one. ये parliamentary system of government is one in which government is responsible to the parliament. Government is the responsible to the parliament. Parliament and can be removed by it. माने कोन ला parliamentary system रे government रे कोन हला ना government is responsible to the parliament. सरकार कोन parliament over निर्भरशील होंती and can remove by it मध्ये remove करि पारंती. Second point, cabinet form of government. Cabinet form of government is a mechanism of parliamentary democracy. Cabinet form of government is a mechanism of the parliamentary form of democracy, ensuring the collective responsibility of the government to the people. Ensure the collective responsibility to the government of the people. Cabinet form of government रो कहला से ओडा छि mechanism कोन करे parliamentary democracy कोन करे collective responsibility दिए दे कोन करे government to people मतलब सरकार तो साधारण आम आदमी पर्यंत केमति सेटा पहुंची पारियो सेटा को ये करे. Cabinet form of government is a mechanism. Cabinet form of government is a mechanism of parliament of democracy to ensure the collective responsibility to the government to the people. Okay. Third one, the main advantages of the parliament form of government. The main advantages form of the parliament form of the government is that is the executive remains the responsible to the legislature. आदरे कोन बे एग्जीक्यूटिव कोन को लेजिस्लेटिव को रेस्पोंसिबल करंती. माने मेन एडवांटेजेस कोन है पार्लियामेंट रो गवर्नमेंट रो से को एग्जीक्यूटिव माने कोन लेजिस्लेटिव को रेस्पोंसिबल माने ताको ता दायित्व ग्रहण करंती. Next one, 4.
there is a parliamentary system of government in India. There is a parliamentary system of government in India because its councils of ministers responsible to Lok Sabha. Its councils of the minister responsible to the Lok Sabha. आम भारत में कौन गोटे पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अच्छी तार कौन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन करते से लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल करती तार कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज डिपेंडेंट चार्ज विभिन्न प्रकार मिनिस्टर थांती से माने कौन करती माने मिनिस्टर माने रेस्पॉन्सिबल को करती लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल करती। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड institutionally the parliamentary government. The principles are institutionally implied by the parliamentary form of the government. Members of the cabinets are members of the parliament. Members of the cabinets are the members of the parliament. माने कैबिनेट रे जो माने मेंबर से माने मध्य पार्लियामेंट रो मेंबर. Minister hold the office till they enjoy the confidence in the parliament. Many ministers enjoy the parliament, they are confident in the parliament. जेतोर से माने कोन आस्था वोट रे जीति रही परिबे सेतल पर्यंत से माने कोन पार्लियामेंट रे रही परिबे एटा होची ताकर कोन नियम. Principles are the implied. Principles are implied the institutional in the parliamentary government. Parliamentary government का principle टा इंस्टीट्यूट हो जाउची हेला पर कोन member of the cabinet of the members of the parliament. Member of the cabinet of the members of the parliaments or ministers hold the office till the fulfill the or enjoy the confidence of the parliament. Next one is the parliamentary sovereignty. Parliamentary sovereignty. Parliamentary sovereignty means the supremacy of the legislative body. The supremacy of the legislative body of parliament over all other government. Over the all other governments, including executive and judicial bodies. Including the executive and the judicial bodies. अदरे कौन है ना parliamentary sovereignty कौन है? से supreme power है. सुप्रीम पावर ने कौन गला पार्लियामेंटरी गला पर से कौन गला एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के मध्य कौन गला गोटे ये मन ताको मिसै गिरो पिला. ओके पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी मींस द सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज पार्लियामेंट ओवर ऑल अदर द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल. In India there is no parliament. In India there is no parliament sovereignties but rather than there is a constitutional sovereignty. अभी हम भारत रे कोन माने कोन होची पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी नाही किंतु हमर कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी अछि माने भारत इंडिया रे. नेक्स्ट वन इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी. बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी. फर्स्ट वन इज द रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट वन इज द रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. कोन ना हम रिटन में लिखित आकार माने कोन कॉन्स्टिट्यूशन होची जो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ माने कोन ता भीतर होची माने हमर गोटा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आउ माने गोटा संवैधानिक लॉ आउ साधारण लॉ नियम संवैधानिक नियम आउ साधारण नियम भीतर गोटे पार्थक्य रहउची. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ. Next one, Parliament itself was created and functioning with the regard to the Constitution. Parliament itself was created. Parliament द्वारा कोन गठन हेउची कोन होची फंक्शन भी करूची with regard to the Constitution. माने Constitution अनुसार से कार्यक्षम हेउची बा कार्य करूची. Parliament itself was created and functioning with the regard to the Constitutions. Okay. Next one. There must be some constitutional body. There must be some constitutional bodies to look after the legality of the act of the parliament. There must be some आधे कोन होची किछि constitutional body होचंदी look after legality को माने देखिया पई माने पार्लियामेंट जो लीगल फंक्शन होता को चेक करिया पई किते माने constitutional body सब रहउचंदी. There must be some constitutional body to look after the legality of the parliament. To look after the legality of the parliament of the constitutional body. Okay. Next one. There should be an express or implied
express or implied provision in the constitution which support the supremacy of the constitution. आधे कोन होची गोटे एक्सप्रेस गोटे इम्प्लाइड प्रोविजन अछि जे से कोन करछि कॉन्स्टिट्यूशन को माने अग्राधिकार दउ सबले आगो को रखि चालुछि माने हमर संविधान ता सबले आगे को रहउछि. There should be an express or implied provision in the constitution which support the supremacy of the constitution. Support the supremacy of the constitution. Okay. Next one, the constitutional provision. Next one is the constitutional provision. Constitutional provision. Article 14 of the Indian Constitution. Article 14 of the Indian Constitution provide for equality before the law. Provide equality before the law and the equal protections of the law. And the equal protection of the law. आर्टिकल 14 जो आर्टिकल 14 टा कोन करछि हम भारत रे कोन करछि इक्वालिटी बिफोर द लॉ माने नियम आगे समस्त समान इक्वल प्रोटेक्शन शब्द लॉ मध्ये समस्त को समान सुरक्षा जोगाई दबो. ओके. आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provide the equality before the law and the equal protections of law. Equality before the law and equal protections of the law. Article 14 provided equality before the law and equal protections of the law. Okay. Next, Article 124(1). Article 124(1) of the Indian Constitution provides. Article 124(1) of the Indian Constitution provides the establishment of the Supreme Court of India. Establishment of the Supreme Court of India. Article 124(1) रे कोनला हमर कोन सर्वोच्च न्यायालय प्रतिष्ठा हला. Article 124(1) of the Indian Constitution. Article 124 of the Indian Constitution provide an establishment of the Supreme Court of India. Okay. Next, important points. As regards legislation of the British Parliament. As regard to the legislations of the British Parliament is supreme or the subordinate. But in India, the power of the Parliament to legislative is limited. हमर होची कोन हला हम जे देखिया माने कोन बाहर ये देखिबा कोन होची legislation of the British Parliament के हम जीवा देखिया कोन होची सुप्रीम सेट कोन ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम बा सब जो आगे रहउची सबऑर्डिनेट. बट इंडिया रे कोन होची पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव भितरे गोटे सीमित भाव रहउची तार लिमिटेशन रहउची सेति पय कोन होची हमर इंडिया रे कोन लिमिटेशन रहउची. आज रिगार्ड टू द legislations of the British Parliament को हम गले supremacy or super subordinacy. But in India the power of the Parliament is limited. Thanks all of you. Please share, subscribe and click the bell icon. Thank you.